हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। वेरी वार्म वेलकम टू ग्लोबल मार्केट्स एंड मैक्रो डिस्कशन विद एसडी। मैं हूं एसडी शानुंदर दास, मल्टी एसेट ट्रेनिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। बिफोर you start watching the video, kindly remember risk management rule number 1, that we do not listen to others and trade। किसी का सुन के ट्रेड नहीं करते हैं। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट का रूल नंबर 1। सो इन दिस वीडियो बेसिकली करंट मैक्रो के ऊपर मैं थोड़ा हाईलाइट करूंगा, along with I'm going to take a look at different market, how they are doing, different asset class. So every week, first of all, I start with the economic calendar. Economic calendar is very important for my understanding. अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हो, you can visit my website, where if you follow the live insights, you will reach my YouTube channel, where global macro and other type of investing के बारे में कई सारे वीडियोस दिए हुए हैं, जो आप जरूर देख सकते हैं and मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो यहाँ पे x.com यानी x में भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माय x प्रोफाइल। x, that is, the owner is Elon Musk. Previously it was Twitter, so this is my X profile. Now let's get back to the discussion of macro and others. So three macro theme के ऊपर मेरा ध्यान है, along with the fourth one that has come, the disruption by Donald Trump. Donald Trump, the US president, जो है वो thrive करते हैं when the chaos is created. He thrives in it and he does very well. And this time, the Trump administration, in many ways, are moving very, very fast. So it will have geopolitical implications. Three theme के ऊपर जिसमें मैं नजर रख रहा था, that I was keeping watch, is China. China का growth. I think China could be coming back into growth. That's why some of the money we have put into Chinese stocks. The manufacturing PMI is previous was 50.1, इस बार का आया है देखिए 50.8, much higher. Any number जो होता है PMI रीडिंग का एक सर्वे बेस्ड इंडेक्स है। Any number above 50 जो होता है वो दिखाता है ग्रोथ। So growth वापस आ रहा है चाइना में। This is positive news for Chinese stocks, positive news for base metals, not so positive news for other global commodities or emerging markets like India. India के लिए positive news नहीं है, क्योंकि हमारे stock market से money now can flow to the Chinese stock market. This week काफी सारे important data points आ रहे हैं. This PMI reports will help us understand the overall growth of the economies. चारों तरफ से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई विल बी रिलीज। मंडे का मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस विल बी ऑन यूरोप का इन्फ्लेशन नंबर। दोपहर को 3:30 बजे ही आ रहा है, 3:30 PM इंडिया टाइम। एंड रात को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिपोर्ट 8:30, विच विल ऐड टू द वोलेटिलिटी। इफ इट इज स्ट्रॉन्ग, अगर ये स्ट्रॉन्ग आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, हम लोग हायर इंटरेस्ट रेट, स्ट्रॉन्गर डॉलर, डॉलर बियरिश में है, थोड़ा कमबैक नजर कर सकते हैं विद आईएसएल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। ट्यूसडे इज रिलेटिवली काम, थोड़ा काम रहेगा ट्यूसडे, कुछ खास डेटा पॉइंट्स नहीं है। वेडनेसडे once again will be busy day because lot of services PMI will be coming up, along with US का ADP यानी प्राइवेट एक्यूमुलेशन ऑफ डेटा के हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, नॉट गवर्नमेंट पेरोल। लाइक गवर्नमेंट पेरोल विल बी रिलीज, गवर्नमेंट डेटा, नॉट पेरोल, डेटा विल बी रिलीज ऑन फ्राइडे। So before Friday, this Wednesday, ADP employment data will come. That will set the mood for Friday's data. Of course, we have services PMI report from the US. जिस तरफ नजर रखे रहे। Next, what we have is the most important data now will be lining up from Thursday. Thursday we have European Central Bank का rate decision, very important for euro currency and European stocks.
and Friday are our most important data of the global market, that is the non-farm payroll data or the US unemployment report. So these are the data points. अभी थोड़ा जो मैक्रो थीम के ऊपर मैं बात कर रहा था उसके ऊपर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा. One of them is interest rates. Interest rates is the major concern. Like for example, let's go to topics, central bank, and under central bank I am going to Federal Reserve. फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन को नजर कर रहे हैं. मुझे दिख रहा है अनलेस जून महीने से पहले कोई भी रेट कट मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है. जून में फॉर द फर्स्ट टाइम मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 4.25 और previously यानी just 1 week ago market expectation was there will be only 2 rate cuts of 25 basis points each. Currently market is pricing 3 rate cuts of 25 basis points and altogether 75 basis points of rate cut is now market expecting, which is little dovish on the lower side compared to past data. तो इसका एक implication है कि rates काफी even if it has 4%, I'll say थोड़ा high के तरफ ही रह रहा है rate, which is अगर यहाँ से rate increase होता है, which you can observe let's say through asset master के जरिए अगर हम लोग rates को observe करेंगे, थोड़ा long term chart पे अगर rate को observe करेंगे, let me bring the plain chart and let me take you to the interest rates. So interest rates has broken a very long term trend line. So there is a possibility rates could move even higher and that will be very near. So rates के ऊपर मेरा ध्यान रह रहा है. One point is rate, second is China. China में हम लोग PMI से and other data से as well as Chinese stock market से देख चुके हैं कि growth could be coming back in China. चाइना का ये हम लोग थोड़ा स्टॉक मार्केट एंड इंडिविजुअल कैसा परफॉर्मेंस रहा है वो भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. लाइक स्टॉक्स, इफ वी लुक एट स्टॉक्स टू ईयर टू डेट परफॉर्मेंस, मतलब इस साल the top performer has been Russian stock exchange, of course, because Trump could be looking for a peace deal that is good for Russia. अगर peace होता है that is beneficial for Russian stock exchange. China is coming back. Second highest performer is Hang Seng. Then we have Germany, France, London, Korea, Indonesia, US Dow Jones, Vietnam, Singapore, Toronto Stock Exchange, that is Canada, US S&P 500, and gradually Bovespa is the Brazil index. Our Sensex has not done well. It is the 6.8% almost down. But Argentina and some of the other stock index have done worse. But in Asia, we are one of the worst performers. So India ka overall situation is not well. We'll look at commodities, which commodities have done well year to date. Coffee, I can see. Then we have lumber, so some of the soft commodities which has done well. Copper has done well. Gasoline, gold, gasoline has significantly gone up. Latest round पे last 1 month का अगर data हम लोग check करेंगे, natural gas, copper, lumber, gasoline, they have all fired up. Or down performer this year has been cocoa, that is good for chocolate producers, and the orange juice. Orange juice is down almost 40% year to date. This year 2025, the worst performer is cocoa, orange juice. The best performer is coffee, lumber, copper, and gasoline. With this, we are going to take a quick look now through different markets. Before that, let me highlight the third point. You miss over here. 3 factors I'm looking at. One is, other 2 are geopolitics. That is, one is the
Ukraine war and another is the Middle East tension. तो मिडिल ईस्ट टेंशन मॉनिटर करने के लिए मैं एक्चुअली शिपिंग को मॉनिटर कर रहा हूं। ये जब से मिडिल ईस्ट में ट्रबल हुआ इन द रेड सी, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हैज एक्चुअली डिक्लाइन पासिंग थ्रू द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल एक इंपॉर्टेंट चैनल है कम्युनिकेशन ग्लोबल ट्रांसपोर्ट का। वहां से जो ड्रॉप हुआ है, आई डू नॉट सी एनी इंप्रूवमेंट्स देयर। So despite Trump's diplomatic effort, I'll say in the Middle East, not much has changed. It is as per Suez Canal, we are seeing the same kind of traffic decline. Next, हम लोग देख रहे हैं कि Ukraine, where last week President Zelensky of Ukraine visited the White House, and we all watched through the video, a 50-minute video where Donald Trump and Zelensky, along with Vice President Vance and others, they were sitting at the White House Oval Office, but finally they had a dispute. A deal was not reached. So that is not obviously geopolitically good, but मुझे नहीं लगता it is going to have a huge market implications. ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि मार्केट में बहुत implication होने वाला है इसका। Rather, अगर डील हो जाता, it could have been good for the market. डील नहीं हुआ, it is not a surprise. ये ना होने का ही expectations था, and ये chance है ही possible में आगे जाके ये deal will be completed. We are basically एक tough fight चल रहा है. That is, the Trump is representative of एक type of world view. And already the existing worldview जिसके part होके UK and other, like one Norway company is no longer, Norway oil company is no longer filling up American ship, the warships, उनको fuel नहीं देने का decision लिया because of this Ukraine debate. तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ल्ड व्यू जो है लीडर्स का, इट इज गोइंग टू चैलेंज द न्यू वर्ल्ड व्यू दैट इज द डोनाल्ड ट्रम्प एंड अदर्स हैव बीन ट्राइंग टू ब्रिंग सिंस 2016। 2016 से ये लोग जो ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट वर्ल्ड व्यू एंड द डिफरेंट कंप्लीटली रिनोवेशन ऑफ द सिस्टम। So this is something new, never ever attended. So US debt clock में अब एक ऐड कर दिया गया। If you are not familiar with US debt clock, ये basically दिखाता है US का national debt। इसमें अब एक ऐड ऑन हुआ है जो पहले नहीं था, is the DOG clock, that is Department of Government Efficiency. How much money it is saving? This is an initiative by Donald Trump, Elon Musk, basically to balance the US government budget. This is a good news. Method पे discuss नहीं कर रहे हैं, but good news कि they have actually decided to address the problem. US का debt is a major problem. जैसा हम लोग देखिए interest rate going up is a major threat, and one of the reason interest rate can go up is because of the US national debt, very high level of debt. So it is good thing that possibly DOGE, Department of Government Efficiency का expectation है, it has already reduced $156 billion of expense. So one side basically इतना कुछ हो रहा है, साथ में Trump will cut Ukraine का supply from US, Ukraine का support. So many things are happening. But इसको अगर combine करके, we'll see from the above or aggregate what this is basically is what is called fiscal contraction. Government is basically reducing its spending. Government जब reduce spending करता है उसको बोलते हैं fiscal consolidation और contraction. Reserve banks जब interest rate increase करते हैं, that is equal to monetary policy contraction. Or contractions are always bad news for the market, whereas expansions are generally good news for the market. So DOG clock, it's a mixed feeling, but it is a good
good thing in the going in the medium to long term. This will tackle US debt, but it can be a bad news in the short term because growth can slow down as we cut. Now, what we are going to look at is we are going to take a look at some of the stocks as not sorry, some of the indices as well as the global markets to see how they are doing, what is the current ongoing trend that could be happening. Or first, I'm going to start with the dollar index, then I'll move to the commodities, and then finally I'll move to the equity indices. Some of the equity indices like S&P, Nifty 500, etc. So first I'm looking at the dollar index and I'll use the daily chart, and इसके अंदर I'm going to use the foreign exchange or the currency setup का इस्तेमाल करें. So dollar index after a strong correction it is showing some comeback दिखा रहा है dollar index, but comeback पे doubt है because lot of strong resistance on the upside, so this comeback may not be sustainable of the dollar. And once again, maybe along with this US employment or upcoming inflation data, it will start to fall to the downside. Dollar has overall, I'll say, made a positive comeback after the steady decline. Very likely either ये consolidate करेगा या नीचे जाने का मतलब डिक्लाइन होने का चांस ही ज्यादा दिख रहा है. We'll look at gold. We're not looking at हर काउंटर को नहीं देखेंगे, इंडिविजुअल जो काउंटर इंपॉर्टेंट है like gold is very important, dollar index is very important, Nifty 500. So these securities will keep a check on. Gold today it is up as we can see from the data 0.25% XUSD, and GC1 yani comic gold is up significantly almost a percent. But gold का bullish phase अभी नहीं है. As per the daily chart, gold का sell off हुआ है. It is a low probability sell trade. जो आप देख सकते हैं sell trade का जीतने का chance less than 30, but it is definitely not in the buy phase. Further sell off gold में होने का chance definitely है. I'll expect gold then to come down towards $2,780, yani another $80 decline, or that will be around 4% decline in gold is very much possible. We are looking at USD INR, that is our Indian currency. Indian currency is once again going up against the US dollar. Sorry, going up means USD INR going up, Indian rupee का value नीचे जा रहा है, it is depreciating, and this USD INR overall एक range में maintain हो सकता है. RBI will try to defend the upside. ऊपर की तरफ जाने में रोकने की कोशिश करेगा around 87.6. एंड रूपी एक कंसोलिडेशन होने का चांस है, बट नीचे का ज्यादा डाउनसाइड to USD INR, even if dollar is going down, I'm largely not expecting or anticipating. Next we are looking at gold. We have taken a look at. Let's look at the copper because copper has been significantly stronger. Is weak. Copper has done very well. Copper में backwardation भी चालू हुआ है. Means fundamental में भी थोड़ा change हुआ है. Daily chart is more of a range दिखा रहा है, कोई buying का मौका है नहीं अभी. Next we are looking at international indices like S&P 500, और इसके लिए मैं अपना सेटअप को इंडेक्स में चेंज कर लूंगा. I'll use the international index में जो that I've already अब ठीक है. निफ्टी 500 का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, अलॉन्ग विद नीचे का भी एक टेबल देखेंगे. मैं अपडेट कर रहा हूं राइट नाउ. आई हैव टू सेव दिस टेम्पलेट. कैसे सेव करते हैं टेम्पलेट को? आप यहाँ पे टेम्पलेट जाइए, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट, उसमें आप डाल सकते हैं
कि इंडेक्स, दिस इज इंडेक्स इंटरनेशनल, ये नाम के मैं सेव कर दूं. So next time the index international, or I have saved it incorrectly, index international 2025. तो जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स, और याद रखिएगा कभी कभी आप अगर सेम देखना चाहते हैं सिक्योरिटीज, आपको ये क्लिक करना होगा. लेट मी सेव once again, remember symbol and remember interval, and then you save, you get the exact securities to the exact time frame. Currently मुझे दिख रहा है S&P, Dow, Nasdaq all are under pressure. China has come under pressure, whereas European stocks are showing in the green. थोड़ा यूएस स्टॉक मार्केट का चार्ट देखेंगे. वी आर लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म चार्ट. थोड़ा वीकली चार्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें एक सेल सिग्नल आया है लास्ट वीक, दो इट इज अ वेरी वीक सेल सिग्नल, बट ये इंपॉर्टेंट टॉप के ऊपर अपना फोकस ला रहा है. इट्स लाइक could be forming a very important top like Nifty did, and then go for further decline. Similar sell signal हम लोग देख सकते हैं if we look at the Nasdaq, which is the US का टेक इंडेक्स. इसमें भी एक सेल सिग्नल अपीयर हुआ है लास्ट वीक. तो अगर ये वैलिड हुआ इस वीक, सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर रहेगा इन द यूएस इंडिसेस. A lot of data है, so it will add to the volatility. अब हम लोग देखेंगे हांगकांग. हांगकांग के स्टॉक मार्केट इज अप, आज भी अप है, एंड इस साल अप है. इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड. हांगकांग स्टॉक्स आर कमिंग बैक इन फेवर, और जैसे ही हांगकांग स्टॉक्स फेवर में कम बैक कर रहे हैं, लॉट ऑफ चाइना स्टॉक्स हैव गिवन डबल, सम हैव गिवन ट्रिपल डिजिट रिटर्न. It's taking some time. What I will do in meantime, I'll try to apply it once again. Yeah, it was something issue with the previous one. The latest, when once I applied go to indicators, it came immediately. So last जो open था indicator, उसमें कुछ issues आ रहे थे. तो कभी भी issues आ रहे हैं आपको, you simply remove it, go to invite only, apply once again. So overall धीरे धीरे दिख रहा है कि हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स इज गोइंग अप. आई थिंक फर्दर चाइना का राइज वेरी लाइकली रहे. टू समराइज क्या हो दिख रहा है, ओवरऑल वी डिस्कस द ग्लोबल मैक्रो, जहां पे मेरा फोकस है यूएस का डेट एंड इंटरेस्ट रेट्स, जिसके अंदर आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी वर्क. देन आई एम लुकिंग एट चाइना, also now the चाइना के साथ साथ चाइना में ग्रोथ, एंड आई एम आल्सो लुकिंग एट कि क्या हो रहा है जियोपॉलिटिकली टू फोकस. वन इज मिडल ईस्ट towards Palestine and Israel peace. Other hand, we have on the Asia and Eurasia, rather not exactly Asia, Europe plus Asia comes. There is Russia-Ukraine war, where Europe is on a different path or different idea path than the new US administration under Donald J. Trump. इसके अलावा हम लोग देखें कि इक्विटी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, बट आवर मार्केट निफ्टी 500 इज नॉट इन अ गुड शेप. तो डिफरेंट अलग मार्केट अच्छे शेप में है, बट हम लोग का जो मार्केट है निफ्टी 500 इज करंटली नॉट इन अ गुड फेज. इनफैक्ट यूएस स्टॉक में सेल ऑफ जो सिग्नल आ रहा है, देयर मे नॉट डू वेल, कैन गो फॉर कंसोलिडेशन और कैन गो फॉर मच बिगर करेक्शन. ये अगर बिगर करेक्शन है तो वेरी लाइकली निफ्टी जो है वो और करेक्ट करेगा ऑन द लोअर साइड. So that's all friends, a small overview of the global macro and markets. All the best to you from my side, and as always, happy trading.